First of all, thank you so much, sir, for joining my podcast today. It's a pleasure to have you on my session today. So the first thing I should ask you, currently you are on a retirement phase. How is life is going? Missing those busy schedules? Thank you for inviting me onto your platform. And I'll be very honest, I'm not missing anything. Yeah. I did my bit when I was there in uniform, and it was intense tenure. It was an intense tenure when I was in uniform, and I'm out of that action phase. So I'm enjoying the time with my family, enjoying learning new and different things in the civvy street, constantly trying to upgrade myself, and I'm good. What you are learning, sir? You said you are learning new things. What are those? When I say I'm learning, it is more about the aspects which are desired outside, as in on a professional front, the kind of security or the kind of understanding that we had back in the uniform, it was different. And when it is in the civvy street, the dimensions change, Hmm. the limitations change, the rules of engagement change, Hmm. the laws change. So I'm trying to learn and evolve as in when I'm getting to know the things outside. That is what is happening. Okay. So we are mostly curious about your uniform days. I'm also curious what you are doing right now, but from the viewer's point of view, sir, what was your first posting? Do you remember? Like, how were the days? Initially, I went to 2 para SF, which was in Bangalore. Okay. I wouldn't call it a posting because when you go to a battalion for your probation, Hmm. so unless and until you clear the probation, which is the initial 90 days, it is not considered a posting. So Bangalore was the first place where Hmm. I went for the probation, which subsequently I could not clear because of an injury. I came back to a place called Gandhinagar, which is in Gujarat, Hmm. and from there I again went for the probation in Agra. Okay. So to be considered as a posting, Gandhinagar would be the first place, which was which where I was. Okay. So इसके अलावा सर और कौन सी जगह पे आपकी डिप्लॉयमेंट हुआ था अभी तक? I have spent time in फिर मैं आगरा गया था. आगरा के बाद फिर मैं कोर्स करने गया था मऊ में. ओके. मऊ के बाद फिर मैं वापस अपने यूनिट को ज्वाइन किया था. उस टाइम यूनिट थी शिलोंग में. फिर शिलोंग से तेजपुर, तेजपुर से मणिपुर, मणिपुर में इट वाज इम्फाल, इम्फाल से फिर ईस्टर्न मणिपुर, एंड फिर वहां से जोरहाट, जोरहाट से शिलोंग, शिलोंग से फिर एक कोर्स कोची डाइविंग कोर्स करने गया था. उससे पहले अरुणाचल गया था वैलिडेशन के लिए और एक लॉन्ग रेंज पेट्रोल के लिए. फिर अगेन बैक टू यूनिट, फिर स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल नाहन. केम बैक अगेन, सर्व्ड इन मणिपुर. उसके बाद गॉट पोस्टेड टू दिल्ली, एसएफएफ हेडक्वार्टर में था मैं. उसके बाद इन बिटवीन आई डिड माय जंप्स, माय कॉम्बैट फ्री फॉल जंप्स देवर इन ओडिशा. बीच में नॉर्थ में भी गया था मैं, ले एंड अप नॉर्थ, ले के ऊपर सियाचिन बेस एंड ऑल. Then from Delhi back to my unit in Assam, and from Assam I went to Bais Maratha, which was again in Gandhinagar. फिर गांधीनगर से I finally retired. So sir, जितने like the places you took, I think you mostly worked on Northeast, if I'm not wrong. Yes, my unit was raised to take care of the northeast part of the country. Our area was in the northeast part. So we were supposed to specialize in that part, whether it was live situation training or it was conventional warfare.
तो स्पेशल फोर्सेस में जनरली ऐसा ही होता है, आप एक सेक्टर के ऊपर स्पेशलाइज करते हैं और उस टेरेन को जानने की कोशिश करते हैं, वहाँ की डेमोग्राफी को समझने की कोशिश करते हैं, उसके कंस्ट्रेंट्स को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, उस पे ट्रेनिंग करते हैं, इवॉल्व करते हैं, अपने आप को इक्विप करते हैं, एंड दैट इज हाउ इट हैपेंस। सर ये लगभग कितने दिन लग जाते हैं एक टेरेन को समझने के लिए, स्पेशली लाइक नॉर्थ ईस्ट टेरेन्स इफ यू टॉक अबाउट? For that matter, any terrain, and if you see the mountains up north, or the mountains in Arunachal, or the deserts of Rajasthan, मेरे हिसाब से if you want to train yourself and your men, because you need to fight hand in hand, आपको मिलके ही लड़ाई करनी है, मेरे हिसाब से 1.5 से 2 साल लग जाता है स्पेशलाइज करने में, उस टेरेन को अच्छे से समझने में, और उस टेरेन से आप कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, and at the same time how can you deny the enemy to exploit the vulnerabilities or to make the best of the terrain, इन दोनों चीजों को इंश्योर करना अगर आप चाहते हैं तो आई थिंक इट विल टेक यू अराउंड 1.5 2 years, 1.5 2 साल लग जाता है। अच्छा, तो सर लाइक आई हैव रिसेंटली बीन टू नागालैंड एंड मणिपुर, इवन इसके एक साल पहले भी आई वाज इन मणिपुर, आई कवर्ड द ऑफिसेज ऑफ देयर। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा लाइक इफ यू सी इन आवर नेशनल लेवल मेनी पीपल डोंट नो दिस प्लेसेस, but I have been to the district, so I know these are very beautiful places. Like as we talk about, if we compare, I would say suggest like one of the beautiful mountains I have seen in Manipur and Nagaland. But your aspect is bit different. Like how is it for your point of view? जी, नेचर इज ब्यूटीफुल, हाँ, नेचर इज मर्सीफुल, नेचर तो हर जगह अच्छा है, हाँ, उसको हम इंसानों ने अपने एजेंडाज और पॉलिटिक्स की वजह से खराब कर रखा है। आप देखिए, श्रीनगर को एक टाइम मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता था, 90s से पहले मूवी शूटिंग होती थी वहां पे, यू सी व्हाट इज द स्टेट, और व्हाट वाज द स्टेट इन द लास्ट 20 30 years, आई मीन अभी भी पूरी तरीके से तो नहीं इम्प्रूव हुआ है। सिमिलरली wherever you have mountains, wherever you got less people, जनरली वो एरियाज प्रिजर्व्ड है, प्रिस्टीन है, और एक कारण तो मैं ये भी कहूंगा कि वहाँ इनर लाइन परमिट है, टूरिज्म रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में है, कम लोग जानते हैं, तो ब्यूटी जो है नेचर की ज्यादा प्रिजर्व्ड है। द डे यू हैव thousands of tourists flowing in and hundreds of hotels coming up, uh, things will not be the same. हमारे यहाँ रूल्स और रेगुलेशंस को एनफोर्स करना बहुत डिफिकल्ट है। खा के पॉलिथीन की गंदगी फैलाना, अननेसेसरी किसी जगह को क्राउड करना, किसी चीज को ओवर हाइप करके बिजनेस और पैसे बनाने के लिए वहां भीड़ को इकट्ठा करना, सो जो चार्म होता है उस जगह को जाके अपने टाइम पे एक्सप्लोर करके देखने का, वो खत्म हो जाता है। सो नॉर्थ ईस्ट, यस इट इज वेरी ब्यूटीफुल, और वो हमेशा से कट ऑफ रहा है क्योंकि हमारे पास पेरिफेरल्स ही नहीं थे, हमारे पास मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ही हमेशा से रेस्ट्रिक्टेड रहा है। इम्फाल एक एयरपोर्ट, एक क्लासिकल एयरपोर्ट था जिसकी कनेक्टिविटी मोस्टली दिल्ली से थी, उसके अलावा लोग कोलकाता के ईस्ट में जाना पसंद ही नहीं करते थे, इतना लेंदी जर्नी, ट्रेन की हालत अगर आप देखो, हाइजीन इज बैड, इतना लंबा जर्नी, ऊपर ऊपर से बिकॉज ऑफ दी काउंटर इंसर्जेंसी कंडीशन, जगह जगह पे चेक पोस्ट, जगह जगह पे रेस्ट्रिक्शंस, चेकिंग्स, एंड इंटर ट्राइबल राइवलरी की वजह से कभी रोड बंद हो जाना, फ्यूल का प्राइसेस बढ़ जाना, मिल्क का प्राइसेस बढ़ जाना, बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज का ना मिल पाना, और मेन स्ट्रीम मीडिया में या चैनल्स पर इनके बारे में कभी आई डोंट थिंक कि कभी अच्छे से गवर्नमेंट, वेदर बीट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी अच्छे से ऑर्केस्ट्रेट किया हो, डेमोन्स्ट्रेट किया हो कि यहाँ इतना कुछ है आप लोगों के लिए अगर आप आए। तो मल्टीपल रीजंस है जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट हमेशा से सेक्लूडेड रहा है, बट यस इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग to get them to mainstream. When I say get them to mainstream, आप उनको मेन स्ट्रीम में लाने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको अपनी तरफ बना ले, वो जैसे हैं, जो उनके प्रैक्टिसेस हैं, जो हाँ एक्सेप्टेंस बिलीफ सिस्टम है, उनको उसी कंडीशन में उसी हिसाब से एक्सेप्ट करें,
और इक्वल प्लेटफॉर्म पे उनको बिठाएं और that's it. I mean, I think उससे things should improve. So if we talk about Manipur, like I've been to like Imphal, तो obviously I've been to Chandel, I've been to Churachandpur and Nagaland also, 6-7 districts I've been to. One beautiful thing I have noticed about the people out there, they are very skilled person. They're not like us. We are somewhere dependent. This city culture people, if you talk about Delhi, Calcutta, metropolitan city, we are somewhere dependent somewhere or the other. These people are very skilled. So now connecting it to the counter insurgency, was it a challenge to fight with people who are more skilled? If we compare with, Naxalites in Chhattisgarh or the terrorism in Kashmir. There is a concept called son of the soil. Okay. उस मिट्टी का बेटा. If you're fighting somebody in his terrain, in his land, in his climate, wherein he can easily thrive, survive, mix, intermingle, it is extremely challenging and difficult. So that is one part of the answer. The second part, जो आपने बोला skilled, any place which is not replete or overflowing with technology, how do people survive or how do people make their life comfortable? जो चीज मशीन कर सकती है वो मशीन वहां नहीं है, तो फिर आप वो काम को कैसे अंजाम देंगे अपने हाथों से? So there are many benefits of staying in such places. Example, आप physically अपने body को involve करते हैं, so you don't have lifestyle disease. You don't have the concept of social media, star likes, dislikes, competition, unnecessary competition. तो वहां पे mental health issues नहीं होते, depression ना के बराबर है. Most of the deliveries are still normal in the houses. I'm sure आप इतने districts आपने visit किया है. So the lady who's pregnant is doing most of the household things. Yes, there are problems. Basic hospitals नहीं है बहुत सारी जगह, बहुत सारे opportunities जहाँ पे हम बचा सकते हैं लोगों को, वो शायद नहीं हो पाता है. So that balance is not there, I agree. But the advantages, if you see, the air is pure, the water is natural, the meat that they eat is hunt kiya hua meat, so it is all grass fed wild animals, so it's wild game. तो उसको आप ये जो फार्म्स में हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स इंजेक्ट करके जो एनिमल्स पैक होके फिर हमारे पास आते हैं, उनके साथ कंपेयर करेंगे तो न्यूट्रिशनल वैल्यू और बाकी चीजों में बहुत फर्क होता है. So the also the kind of skills that they have with their da, जिसे वो उनका जो टूल है, बैम्बू से they can make anything, traps से लेकर basket से लेकर houses से लेकर, so whatever nature has given them, they have mastered the art of collecting that from nature, making it, making things out of those materials, and striking that balance, जहाँ पे वो ग्रीडी होके अगर टिम्बर है तो मैं सब कुछ यहाँ से काट के खत्म कर देता हूँ, तो वो चीजें नहीं है वहां पे. I mean to say, sir, connecting it with your operations when you used to see these people, how was it? Like it was tough to fight with them initial days. See, fighting is always tough. और कोई भी opponent अनवर्दी नहीं होता मेरे हिसाब से. कोई भी स्ट्रे राउंड कहीं से भी रिकोशे होके अगर आपको लग जाएगा तो इट कुड प्रूव फेटल, मतलब आपकी जान जा सकती है. आज का फाइटिंग तो तलवार और ढाल वाला नहीं है, दैट आप आमने सामने लड़ रहे हो, कोई लंबा है तो एडवांटेज है, किसी का स्वॉर्ड लंबा है तो ही कैन रीच आउट. आज की लड़ाई आप अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह पे है, कौन टेरेन को यूज कर पाता है, किसके पास सरप्राइज है, किसके पास इनिशिएटिव है, उस पर ज्यादा डिपेंड करता है, एंड ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस. तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा जो डिफिकल्टी था, इट वाज गैदरिंग ऑफ इंटेलिजेंस. The allegiance that these people have, the locals,
was very very strong. Can you repeat, आपको sir? उनका जो एलिजेंस था, उनका उनका लोकल क्राउड के साथ जो कनेक्ट था, अच्छा। आप इंटेलिजेंस कैसे गैदर कर सकते हैं? या तो किसी को आप पे कर सकते हैं, या तो लोकल्स अगेंस्ट हो उनके, दे डोंट लाइक देम, they would feed you with intelligence, or you can collect intelligence from electronic means. देखो, I'm sorry, my uh, health is not that good. या तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से सॉरी इंटरसेप्ट करके यू कैन गेट दी डेटा कि वो क्या बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं. सो इंटेलिजेंस गैदरिंग वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम वहां पे नॉर्थ ईस्ट में. सेकंड, द टेरेन, वहां की पहाड़ियां बहुत हाई नहीं है जम्मू एंड कश्मीर की तरह, बट अंडुलेटिंग है. मतलब आपको एक जगह पहुंचना है तो बीच में दो छोटी छोटी पहाड़ियां आएंगी, तो आपको एक बार चढ़ना है, उतरना है, फिर चढ़ना है, उतरना है, then you reach that place. And most of the villages here in northeast, you must have seen, ये पहाड़ियों के ऊपर है. Old tribal concept of making the villages on the hilltops. Just surrounding a church. So yes, and उस गांव में सबसे हाइट पे फिर होगा चर्च. तो फिर बारिश इतनी ज्यादा होती है, इतने ज्यादा बग्स हैं, मॉस्किटोज हैं, लीच हैं. सो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर अनलाइक J&K हर जगह अवेलेबल नहीं होता. मडी ब्राउनिश वाटर आना स्टार्ट हो जाता है जब बारिश आना स्टार्ट हो जाता है. सो यू डायरेक्टली कैन नॉट फिल अप योर बॉटल्स एंड ड्रिंक. So the administration is a big problem while conducting operations. And obviously these people who are son of the soil, जिनके against हमें लड़ना था, they were expert in IDs. And ID is a difficult thing. आपको तो पता नहीं चलेगा कहाँ लगाया है, and उसका effect भी calculate नहीं किया जा सकता. उसका kill zone बहुत ज्यादा होता है, 30, 40, 50 meters depending on the terrain कहाँ लगाया है. And अगर ID tandem में है, continuous IDs, and if they are remote controlled IDs and somebody is sitting at a vantage point and he is detonating the IDs, so it becomes so much more dangerous. The chances of being ambushed is that much more. So all these problems were always there when I was operating. So you were in which year you were talking about? Around which year? This would be from 2012 to 2018. 80. Okay. So sir, जो चीज आप बता रहे थे कि information, lagging of information was a main challenge for you all during that time. So whatever knowledge I have, correct me if I'm wrong, it said that when the things are cannot be maintained by that administrations, like if we talk about the IAS, IPS, DMSPs, then other than CRPF, then an army has been deployed to maintain that hold. So if that perspective, you all being deployed in that sense, a terrorism or insurgencies rather in Northeast was not being controlled by them. So what was the main point of aspect at that point of time? Because you need to go and do operations, and you at the same point of time that you don't have much knowledge or much informations. So on what basic or what homework you was to do before connecting any operations or prior to any operations? Many operations were area familiarization. The area was so vast, the area of responsibility of a particular battalion or a sector. जब तक आप हर पगडंडी को, हर रास्ते को अपने पैरों से नहीं मेजर करेंगे, नहीं नापेंगे, कल को जब इंफॉर्मेशन आएगी तो आप उसको प्लान नहीं कर पाएंगे मैप पे. जो आपको मैप पे 1.5 घंटा लगेगा, कदमों से जब आप चल के जाएंगे आपको 4 घंटा लगेगा. तो जो एक्शनेबल इंट है वो फिर इट विल बिकम वॉइड, नल एंड वॉइड. आप सोचेंगे मैं 1.5 घंटे में पहुंच के आई विल डू द ऑपरेशन, यू विल नॉट रीच इन 4 आवर्स. सो द इंटेलिजेंस इज नो इंटेलिजेंस, दैट इज नो इंटेलिजेंस. वो पार्टी वहां से चली जाएगी. तो जब तक इंटेलिजेंस नहीं आता, यू गो थ्रू द टेरेन. गूगल अर्थ पे आप देखते हैं, देयर आर अदर एप्स जहां पे आप इंटरविजिबिलिटी वगैरह, वेंटेज पॉइंट्स चेक करते हैं. आप मॉनसून में विजिबिलिटी कैसी होती है विज़ावी इन विंटर्स एंड समर, उसको चेक करते हैं, सर्वेलेंस पॉइंट्स को.
एंड मेन ट्रैक्स, चोक पॉइंट्स, क्रॉसिंग पॉइंट्स, उनको जानने की कोशिश करते हैं. एंड एट टाइम्स व्हेन देयर इज एन इंट, many a time it is not actionable, but you still act on it just to know कि आपका रिएक्शन, आपकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी है. सो इंडिया में ये प्रॉब्लम हमेशा से रहा है. ऐसी कोई सेंट्रल नोडल एजेंसी जो सभी चीजों को कंट्रोल कर सके या कोऑर्डिनेट कर सके, कोई ऑपरेशनल कमांड पोस्ट, वो दैट हैज बीन अ सोर पॉइंट. वी डू हैव, ऐसा नहीं कि इट इज नॉट प्रेजेंट, बट उसकी जो एफिशिएंसी है और उसका जो रीच है, उसका जो इसको थोड़ा कमांड एंड डिस्क्राइब करेंगे कंट्रोल आप? है. सॉरी. इसको थोड़ा आप डिस्क्राइब करेंगे, ये जो जो चीज अवेलेबल नहीं है आप बता रहे हैं? अभी देखिए, मतलब अगर आप देखेंगे तो कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पे पुलिस, आईबी, हम्म. आर्मी और आर्मी इंटेलिजेंस अपने इन्फो शेयर कर रहे हैं. कोई सेंट्रल डेटाबेस जहां पे एक इंफॉर्मेशन एक्स को मिल रहा है तो एवरीबडी नोज इट. सो दैट डज नॉट हैपन. सो इट इज ऑल द इनिशिएटिव ऑफ द टीम कमांडर, ट्रूप कमांडर, कंपनी कमांडर. तो वो पर्सनल रिलेशन बेस्ड हो जाता है. if there is somebody who like me who is shy, who does not go and mix, तो मुझे नहीं पता चलेगा. And if there is somebody who is good in PR, who knows how to talk, who's made good friends, शायद, या उसके कोई और contacts है, relatives है, उसके कोई और पॉलिटिकल लिंक्स है, उनको पता चल जाएगा. तो जो एक फॉर्मल सेंट्रल डेटाबेस होना चाहिए मेरे हिसाब से, दैट फैक्टर इज मिसिंग in that form. Is it still there? Is it still missing, you think? I think it is still missing because ये जो कॉन्सेप्ट है ये ओवरनाइट नहीं बनाया जा सकता. सो दिस हैज टू कम फ्रॉम टॉप. ये नीचे से कोऑर्डिनेट करके काम करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. इट हैज टू कम फ्रॉम टॉप. द कंट्री हैज टू सिट डाउन, थिंक, प्लान, make those laterals जहाँ पे both the side exchange their इंटेलिजेंस की अच्छी बात ये है या बुरी बात, मतलब इट्स अ डबल एज्ड वेपन, कि वो टाइम एंड स्पेस में काम करता है. कोई इंट जो 5 मिनट में रेलेवेंट है, 15 मिनट में इररेलेवेंट हो जाता है. सो सो दैट, और कोई इंटेलिजेंस एक्शनेबल है या नहीं, उसको कॉर्पोरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट बिकॉज समबडी टोल्ड यू और यू हर्ड समथिंग ऑन दी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डज नॉट मीन इट इज गोइंग टू हैपन. सो उसको कॉर्पोरेट करना पड़ता है डिफरेंट सोर्सेज से. उसका टाइमलाइन समझना पड़ता है. उसमें कितने, उसको ऑपरेशनल सक्सेस दिलाने के लिए कितना रिसोर्सेज चाहिए, उस पर प्लानिंग करनी पड़ती है. So intelligence is the origin of a successful operation. So I think a lot can be done on that. So sir, like if I talk about leadership right now, you being a leader, you have to maintain a team. Many times when you went for an operations or in the in the barracks, you maintain a team. What the prime focus you look into it? Because this is not just a question, this would be a tips, because we are budding creators. There are many people work under us also, so it will be like a tips for me. मेरा एक ही एजेंडा होता था, सिंगल. एंड व्हेन यू मेक वन सिंगल एजेंडा, यू विल ऑलवेज स्टिक टू इट. एम हमेशा सिंगुलर होना चाहिए. मैं 99.99% में ऑपरेशंस रात को ही निकलता था एंड रात को ही वापस आता था. दिन में मैं मूवमेंट नहीं करता. सो व्हेन आई वुड मूव आउट ऑफ माई जो भी बोल लो, गैरिसन What the बोल लो, reason, sir, पोस्ट दिन में बोल लो, movement नहीं करने का? I'll tell you आफ्टर दिस. पहले मैं ये बता देता हूँ एम. मैं बोलता था कि हम इतने लोग बाहर जा रहे हैं इस गेट को छोड़कर, ये ऑपरेशन तभी सक्सेसफुली खत्म होगा जब हम इतने ही लोग अंदर आएंगे. इफ आई एम टेकिंग 12 पीपल आउट, माई success will only be there when I get all these 12 people back alive without being injured. So the life of my boy, of my officer, was of prime importance because this fighting will continue. और ये fighting का reason क्या है? It's a political, come diplomatic
मिसअंडरस्टैंडिंग बोल लीजिए, वर्ड बोल लीजिए, उसकी वजह से लड़ाई हो रहा है. सो व्हाई शुड माई बॉय, माई सोल्जर लूज हिज लाइफ? दैट वाज माई एजेंडा. सो इट इज लाइक एक टीम, एक टीम टीम तब होती है जब आपकी जो सबसे कमजोर कड़ी होती है उसको आप इतना स्ट्रांग बना ले कि वहां उस वल्नरेबिलिटी को कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके. So you evolve, you evolve in a manner that your team is, you don't need all Avengers. कि उसमें आपको थॉर भी चाहिए, आयरन मैन भी चाहिए. You need normal guys who can complement each other and become a cohesive team. Understand their responsibilities, know their shortcomings, fill in the void जहाँ पे तो उनका बॉडी कमजोर पड़ रहा है. It could be skills, it could be firefight, it could be survival, and become a strong, cohesive, well-knit, coordinated team with a singular objective. बाकी तो सामने जो काम आएगा हम करेंगे. It could be an operation, it could be long range patrol, it could be surveillance, it could be target designation, it could be anything. So And please, the reason why we would yeah, yeah. and the reason why we would move in the night is, when you move in the night, the signature is drastically reduced. I mean, the number of people that come to know that some party is moving out and in which direction for how long becomes very, very difficult to find out. So, so we coming into the kill zone of an ID or an ambush grows that much less. The chances or the probability goes down that much. That is what I would do. सर एक चीज मैं पर्सनली समझता हूँ कि जैसे you said that you all are highly motivated persons, you have as you said, you have a particular aim and goal, but कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम हर इंसान कभी ना कभी भटक जाते हैं. वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, वी गेट लो डाउन. ये आपके साथ भी हुआ रहेगा. आई डोंट थिंक एनी पर्सन कैन बी हाईली मोटिवेटेड थ्रू आउट द डे और द टाइम. वो टाइम को कैसे एडजस्ट करते थे? इट कैन बी पर्सनल, इट कैन बी प्रोफेशनल, इट कैन बी एनी हैजर्ड्स. How you used to maintain that thing? Like if you ask me, like I'm not a demotivated guy. I don't feel low down. There are times where I break down. Sometimes I know that it will take time, but you somewhere fight with yourself. I think you also went through that. How you used to tackle yourself? See, that's very normal. Frustration होना, disappoint होना, और जब लोड आता है उसके लोड में विल्ट होना, बेंड होना, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल. सबके साथ होता है. बट लेट मी गिव यू अ कंपैरिजन. आपके सिविल वर्ल्ड में यू हैव फ्रेंड्स. वहां पे पोस्ट पे एक ही ऑफिसर होता है. वी डोंट हैव फ्रेंड्स. सो इफ आई शो दैट आई एम अंडर प्रेशर, या आई एम नॉट यू नो in 100% operational readiness, in a state of 100% operational readiness, it starts affecting my boys. और मैं वो नहीं होने दे सकता. That cannot happen. So the kind of self-talking that you do, the kind of re-engineering, rewiring, recalibrating that you do in your me time, your own time, elevates your consciousness level. एंड ये बहुतों के साथ होता है जो कट ऑफ रहते हैं. एंड मैं तो जब था उस टाइम तो ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था. शाम को 4 घंटे जनरेटर पे टीवी चलता था बस. दैट इज ऑल दैट वी हैड. ना फ्रेश खाना था, टिंड खाना खाना पड़ता था. फ्रेश आता था वंस अ वाइल, कभी 14 दिन में, ये 15 दिन कहाँ में एक बार. कहाँ की बात कर रहे हो सर आप? कौन सी जगह की? मणिपुर, मणिपुर उखरूल. अच्छा, उखरुल. हाँ. उखरूल में भी पूरा ईस्ट उखरूल, राइट राइट बैंग ऑन द इंटरनेशनल Sir, बाउंड्री I don't know you विथ have been म्यांमार. to there. I went to a place that was amazing but totally cut off. आज भी मैं 6-7 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ. उखरुल में एक जगह है जेसिमी. इट्स अ विलेज बिटवीन मणिपुर एंड नागालैंड. वहां पे एक ब्रिज है, आकाशवाणी ब्रिज, जहाँ पे सबसे ज्यादा एम्बुश हुआ करता था एक टाइम पे. मैं नॉर्थ उखरूल में मैंने ऑपरेट नहीं किया है, हाँ. क्योंकि देखिए, जब आप एक फौजी पर्सपेक्टिव से देखते हैं किसी एरिया को, तो इट इज ऑल वॉकिंग.
मतलब ऑपरेशंस में जैसे ही हेलीकॉप्टर्स यूज होते हैं सरप्राइज चला जाता है, देन इट इज नो ऑपरेशन. हाँ. फिल्मों में देखने में अच्छा लगता है, हम्म, बट एक्चुअल ऑपरेशंस में हेलीकॉप्टर्स यूज नहीं होते हैं. हम्म, तो अ, तो इफ आई मतलब नॉर्थ ईस्ट में तो वैसे ही डिस्टेंस ट्रेवल करना बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑफ द टेरेन हम्म. एंड सो मेनी नालाज एंड यू नो रिवर्स एंड Water वाटर बॉडीज, मार्श. bodies, yeah. सो हाँ, तो हमें फिर एक एओआर से दूसरा एओआर जाना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत सारे क्लियरेंसेस हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं. तो इट्स नॉट इजी कि आप कहीं हैं और ओवरनाइट कहीं उठ के कहीं से कहीं चले गए. हम्म, तो आई हैव नॉट बीन टू दैट प्लेस, बट आई एम श्योर यू एंड मी अंडरस्टैंड हम्म. मैं क्या बोलने की कोशिश कर हाँ, रहा हूँ. हाँ, हाँ. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. हाँ. Exactly. Sir, I won't take much of your time. We'll finish it in next 5 minutes. So there's a last question that I always wanted to ask you, uh, do you think like it's been 2 years I'm doing the podcast with, but I've never been to, any special forces officers means like we are virtual. I've never been to, physical attraction means kabhi आमने सामने बात नहीं हुआ but mostly I'm into that, civil servants, talking to any DGPs or SPs. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि I have my personal growth is getting higher. I'm becoming more matured. If I compare myself to a normal civilians, I'm not in that comparison because the more problematic you becomes, the more you face the problems, you become more hard. So currently, if you see yourself around what age you are right now, sir? 35, more than 35. I'm 34 now. 33, 34. Okay, so if you compare yourself a 34 guy and standing beside you somewhere who is also 34 but doing something else, do you feel yourself you are more mature or your perspective is totally different? No, I'll agree to that fact because I have grown up in a Sainik school environment. The more the number of difficulties, the more the number of challenges, Uh, the more the number of I'll say uh, obstacles you have in your life, mm, the more is the learning. Because each time you face a difficulty or an obstacle, whether you pass it or not pass it in the first attempt, it will give you some lessons. mm, Life is not easy in a Sonic school. You know, your food, your sleep, your punishments, your games, and on top of that, you need to be at par with the students or the boys who are studying in the day schools outside mm, because you have the same CBSE curriculum. mm, So it does teach you so many things, and then subsequently when you go to NDA and the IMA special forces, and all your life you've been dealing with men, their problems, their professional difficulties, their personal hazards. So you get to know the professional side of things, also the personal side of human being, and you become so much more wise while you deal with the human beings. Especially I might not know thousand things about the machines or computers or mm, software, which I should ideally, because it is all about learning and evolving. mm, But then when it comes to human beings or trying to grasp what is the problem or what is somebody's expertise or ascertaining the right man, right job thing, mm. it comes naturally because I've been doing it for the last 20 to 24 years. So that is how it is. And difficult times make strong men. Mm. So there's a good old wise saying. So when I stand among a crowd and I see people who are of my age, there are very few people who've gone through such a journey full of challenges and uphills Mm, mm, and difficulties. You've seen your uh, friends losing life. mm, You've seen some people doing extremely well in your career. So you've seen almost everything, ups, downs, minus one thing, which is चुगली करना और बैक बैटिंग करना और किसी को नीचा दिखाना, खींचना, ये सब मैंने
नहीं देखा अभी में। तो ये वाइसेस जो है इनसे मैं दूर ही रहा हूँ, बड़े प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहा हूँ। सो आई वोंट नो मच अबाउट दैट, बट यस, दुनियादारी शायद मुझे कम पता हो कि कैसे बातों को मैनिपुलेट करना है, कैसे किसी को आ, गलत जगह इन्फ्लुएंस करना है कि मुझे फायदा हो जाए, वो सब शायद मैं नहीं सीख पाया। बट यस, लोगों का ध्यान कैसे रखना है, सही ऑब्जेक्टिव की तरफ कैसे उनको इंस्पायर करके ले जाना है, सो दैट एवरीबडी बेनिफिट्स, द ऑर्गेनाइजेशन, द पीपल हु आर वर्किंग टुवर्ड्स द गोल, कैसे लोगों को डिफिकल्ट टाइम्स में मोटिवेटेड रखना है। So yes, all those things come naturally when you have such a tenure. It is not only me; it is my community. Whosoever is seen this live or served in such an environment, it would come naturally to them. Thank you so much, sir, for giving the time and opportunity. I hope I learned a lot, and all the people are watching. उनको भी बहुत सारे सीख मिला. If you have any feedback or anything, you also can share about us. I'm happy. I mean, you're doing a wonderful job. आप इतने लोगों से मिल रहे हैं, इतने लोगों के पर्सपेक्टिव को समझ रहे हैं. See, everybody will have a different perspective. Same problem और सेम चीज को देखने के बहुत सारे नजरिए होते हैं, एंड वी शुड बी हैप्पी टू नॉट अग्री. इट्स अनदर स्किल कि मैं आपकी बातों को नहीं से सहमत नहीं हूँ. इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, एंड वैसा होना चाहिए. बट जहाँ पे लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं, जहाँ पे लोग सोचते हैं कि माई ट्रूथ इज द ओनली ट्रूथ और माई नॉलेज इज द ओनली नॉलेज, फिर वहां पे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है. तो एज लॉन्ग एज पीपल आर ओके टू लर्न, इवॉल्व, acknowledge somebody else's perspective, and move ahead with the changing times and the changing scenarios, I think it's fine. There will be no animosity, unnecessary friction नहीं होता उससे. बट जहाँ लोग इमेच्योर बिहेव करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि my language is the only language, my perception is the only perception, my religion is the only religion, my tribe is the only tribe, मैं सबसे अच्छा हूँ, लंबा हूँ, बेहतर हूँ, तेज हूँ, फुर्तीला हूँ, बुद्धिमान हूँ, फिर वहां पे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है. तो माय एडवाइस वुड बी, आप उनसे दूर रहें, चीजों को देखें, समझें, परखें, बात करें, डिस्कस करें, और सीखते रहें. लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग. सो मच टू लर्न. Thank you, sir. Jai Hind. We'll see you someday. If I am nearby to your place, we'll meet you and catch you. And also, I think that will be more opportunity to learn from you. Thank you, and I'm happy to share my experiences. And Jai Hind. Jai Hind. Namaste.